Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to understand one of the most important topics in embryology, that is gametogenesis, including spermatogenesis and oogenesis in a very simple and exam friendly way. So let's get started. So introduction of embryology. Embryology is the branch of medical science that studies the development of a human being from fertilization to birth. It includes the formation, growth, and differentiation of the embryo. So next we will get a view on scope of embryology. The scope of embryology includes study of gamete formation, that is gametogenesis. इसमें आता है formation of male and female reproductive cells, that is sperm and ovum, and it also explains how these cells are produced in the testes and ovaries through the process of meiosis. Second आता है fertilization process. फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है जहाँ पे मेल स्पर्म और फीमेल ओवम जो होता है फ्यूज होता है टू फॉर्म अ जाइगोट, और ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक न्यू ह्यूमन लाइफ का. थर्ड वन इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड फीटस और एम्ब्रियोनिक एंड फीटल डेवलपमेंट. इसमें आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बेबी इनसाइड द यूट्रस, जिसमें एम्ब्रियो और फीटल स्टेज दोनों आती हैं. एम्ब्रियो स्टेजेस आर अर्ली डेवलपमेंट, दैट इज अप टू 8 weeks, and fetal stage include growth and maturation from 9 weeks till birth. Then the fourth one is formation of organs, that is organogenesis. This explains how different organs like the heart, brain, lungs and kidneys are formed from basic cells during early development. Study of congenital abnormalities. Embryology also help us to understand birth defects or abnormalities that occur during the development. This is important for prevention, early diagnosis and treatment. Next, branches of embryology. There are two branches of embryology, two main branches. One is general embryology and systemic embryology. General embryology क्या है, वो study करती है early stages from fertilization, like from fertilization to the embryo formation. Then systemic embryology है, it focus on the development of individual's organ system, कि how the organs are formed from the cells. Next are the stages of human development. Human development is divided into three main stages based on time and the type of changes occurring in the body, in which first one is pre-embryonic stage, that is from 0 to 2 weeks. ये सबसे अर्ली स्टेज होती है डेवलपमेंट की, और ये फर्टिलाइजेशन से शुरू हो जाती है जहाँ पे स्पर्म और ओवम फ्यूज होते हैं जाइगोट बनाने के लिए, और इस स्टेज में जाइगोट जो होता है वो रैपिड सेल डिवीजन करता है और कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है लाइक मॉड्यूल और ब्लास्टोसिस्ट. फाइनली इम्प्लांटेशन होती है. तो मेनली ये स्टेज जो होती है उसमें सेल डिवीजन और इम्प्लांटेशन होती है. देन द नेक्स्ट इज एम्ब्रियोनिक स्टेज, दैट इज 3 to 8 weeks, और ये सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है डेवलपमेंट की, क्योंकि यहाँ पे मेजर ऑर्गन्स और बॉडी सिस्टम जो होते हैं फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं. तो बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डेवलप करते हैं, और जो हार्ट है वो बीट करना शुरू कर जाता है. दिस स्टेज इज वेरी सेंसिटिव, और अगर कोई भी हार्मफुल एक्सपोजर इस स्टेज में होता है तो इट कैन लीड टू कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज. देन द फीटल स्टेज, दैट इज 9 weeks टू बर्थ. ये स्टेज फोकस करती है ग्रोथ और मेचुरेशन पे. इस स्टेज में ऑर्गन्स जो होते हैं जो फॉर्म हो चुके होते हैं पहले, वो ग्रो करना शुरू करते हैं. बॉडी पार्ट्स जो होते हैं मोर डिफाइंड हो जाते हैं, और फीटस जो होता है वेट और साइज जो होता है अपना गेन करता है. इस स्टेज के एंड में जो बेबी होता है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है और इट इज रेडी टू बर्थ. सो ये स्टेजेस जो हैं प्री एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक एंड फीटल, ये सारी डिस्क्राइब करती हैं कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ. कुछ बेसिक टर्म्स हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हम क्लियर करेंगे. फर्स्ट वन इज गेमेट्स. गेमेट्स क्या है? स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जो किस लिए चाहिए? फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन. देन गैमेट जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. जो मेल गैमेट है वो है स्पर्म. ये मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है टेस्टिस में एंड इज स्मॉल, मोटाइल
and has a tail that help it to reach the ovum for fertilization. Then female gamete, इसको हम ओवम या एग बोलते हैं. ये ओवरीज में प्रोड्यूस होता है, लार्ज होता है साइज में, नॉन मोटाइल होता है और इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. देन हाफ जेनेटिक मटेरियल, जो बोथ स्पर्म एंड ओवम है ये हाफ जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं, मीन्स 23 क्रोमोसोम्स ईच. दिस इज कॉल्ड हैप्लॉइड, n number of chromosomes. When sperm and ovum fuse during fertilization, they form a zygote with a full set of 46 chromosomes, that is diploid 2n, maintaining the normal chromosome number in the humans. So gametes are essential reproductive cells that carry genetic information and play a key role in the formation of new life. Now let's come to gametogenesis. So gametogenesis क्या है? It is the formation of gametes, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स आते हैं, दैट आर स्पर्म एंड ओवम. जो उनकी फॉर्मेशन का प्रोसेस है, दैट इज गैमेटोजेनेसिस. इट इन्वॉल्व सेल डिवीजन, दैट इज meiosis, बाय द प्रोसेस ऑफ meiosis एंड मैच्योरेशन. दो टाइप की गैमेटोजेनेसिस होती है हमारे पास. इन मेल्स दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन टेस्टिस, एंड इन फीमेल oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन ovaries. Next are key features of gametogenesis. Occurs in reproductive organs. जो gametogenesis है वो reproductive organs में होती है, जिनको हम gonads बोलते हैं. जो males में testes है और females में ovaries है. It involves meiosis. It includes a special type of cell division called meiosis. और ये इस process से जो chromosomes हैं वो reduce हो जाते हैं by half, जो जरूरी है to maintain the normal chromosome number after fertilization. Ensures genetic variation. जो meiosis होती है तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो एक्सचेंज होता है और शफल होता है, जिसकी वजह से वेरिएशन आती है ऑफस्प्रिंग में, जो जरूरी है फॉर इवोल्यूशन एंड सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज. एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन. गैमेटोजेनेसिस जरूरी है फॉर रिप्रोडक्शन. विदाउट दीज रिप्रोडक्टिव सेल्स, fertilization and formation of a new individual cannot occur. Next is the process of gametogenesis. Gametogenesis occurs in a stepwise manner. It includes 4 important phases that transform simple cell into fully mature reproductive cell. First one is multiplication phase. In this initial stage, जो primitive germ cell होता है वो divide करता है repeatedly by the process of mitosis. इसकी वजह से क्या होता है, इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है. इन मेल्स स्पर्मेटोगोनिया आर फॉर्म्ड एंड इन फीमेल्स oogonia आर फॉर्म्ड. देन नेक्स्ट इज द ग्रोथ फेज. इस फेज में सेल जो होते हैं अपने साइज में इंक्रीज करते हैं और एकमुलेट करते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड साइटोप्लाज्म और प्रिपेयर करते हैं खुद को फॉर फर्दर डेवलपमेंट. फॉर एग्जांपल, अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है एंड प्राइमरी oocyte है, दे आर फॉर्म ड्यूरिंग दिस स्टेज. देन द मैच्योरेशन फेज. मैच्योरेशन फेज एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है. यहाँ पे म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2 का प्रोसेस होता है. जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है फ्रॉम डिप्लॉइड टू हेप्लॉइड सेल्स, दैट इज फ्रॉम 46 क्रोमोसोम्स टू 23 क्रोमोसोम्स. और हेप्लॉइड सेल्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं. दिस इंश्योर्स प्रॉपर क्रोमोसोम नंबर आफ्टर फर्टिलाइजेशन. देन डिफरेंशिएशन इनटू मैच्योर गैमेट्स. इट इज द फाइनल स्टेज जहाँ पे मैच्योर सेल्स जो हैं चेंज करते हैं फुली फंक्शनल गैमेट्स में. इन मेल्स जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो मोटाइल स्पर्म्स बन जाते हैं, जिसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं हम. और इन फीमेल्स मेच्योर ओवम इज फॉर्म्ड एंड द सेल डेवलप specific structures needed for fertilization. We will get more clearance when we discuss the spermatogenesis and oogenesis. Now let us discuss spermatogenesis. Spermatogenesis क्या है? प्रोसेस है इसमें स्पर्म सेल्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं टेस्टिस में. और ये एक वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है in which the first one is spermatogonia. ये प्रिमिटिव जर्म सेल्स होते हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, अप्लाइड होते हैं ये
दे कंटेन 46 क्रोमोसोम्स और ये डिवाइड होते हैं कंटिन्यूसली बाय माइटोसिस। क्यों डिवाइड होते हैं? ताकि कांस्टेंट सप्लाई जो है स्पर्म फॉर्मेशन की बनी रहे। कुछ जो होते हैं इसमें स्टेम सेल्स में रहते हैं, अदर डेवलप हो जाते हैं फर्दर। सेकंड स्टेप इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दैट इज स्पर्म्स। जो कुछ स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो ग्रो करते हैं और डेवलप करते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। मीन्स ये सेल्स जो होते हैं स्टिल डिप्लॉयड होते हैं, मीन्स 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं, एंड दे अंडरगो द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन known as meiosis 1. Then secondary spermatocytes, ये प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर म्यूसिस 1। जब म्यूसिस 1 कंप्लीट हो जाती है तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल बनता है, दैट इज 23 क्रोमोसोम्स, जो क्विकली अंडरगो होते हैं देन फॉर द म्यूसिस 2। Then the fourth one is spermatids. ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, मीन्स दे कंटेन 23 क्रोमोसोम्स और एक फॉर्म होते हैं जब म्यूसिस 2 जो होती है वो खत्म हो जाती है एट द एंड ऑफ दैट। ये स्पर्म्स जो होते हैं अभी मेच्योर नहीं होते हैं। देन द नेक्स्ट स्टेप इज स्पर्मेटोजोआ या मेच्योर स्पर्म फॉर्मेशन। जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये अंडरगो स्पर्मियोजेनेसिस, मैच्योरेशन होती है उनकी। दे डेवलप हेड जिसमें न्यूक्लियस होता है, मिड पीस जिसमें एनर्जी होती है, और टेल विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट। These mature sperms are now capable of fertilization. So, इन सभी स्टेजेस से सिंपल जर्म सेल जो होते हैं वो ग्रेजुअली कन्वर्ट हो जाते हैं फुल्ली फंक्शनल स्पर्म सेल्स में, जो रेडी होता है फॉर रिप्रोडक्शन। So let's understand spermatogenesis with the help of this diagram. So these are the primitive cells which are present in seminiferous tubules और germ cells बोलते हैं हम इन्हें। तो ये कंटिन्यूसली माइटोसिस से डिवाइड करते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बनते रहते हैं ताकि कांस्टेंट सप्लाई बनी रहे स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। इसके बाद क्या होता है, कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं डेवलप कर जाते हैं और ग्रो हो जाते हैं टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और जब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, देन दे अंडरगो म्यूसिस 1। जब म्यूसिस 1 होता है, at the end of meiosis 1 there is formation of secondary spermatocytes. Secondary spermatocytes क्या है? After meiosis 1 जो primary spermatocytes है वो 2 secondary spermatocytes बनाता है, और ये सेल्स होते हैं हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, मीन्स इट कंटेन्स 23 क्रोमोसोम्स ओनली। और इमीडिएटली ये एंटर कर जाता है टू meiosis 2, और meiosis 2 के बाद कंप्लीट होने के बाद इट फॉर्म्स spermatids। आफ्टर meiosis 2 spermatids फॉर्म होते हैं और ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं बट अभी भी इमेच्योर होते हैं। तो ये spermatids क्या होते हैं, फिर ट्रांसफॉर्म होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस और डेवलप हो जाते हैं इनटू मैच्योर स्पर्मेटोजोआ जिसको हम स्पर्म्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आर फीचर्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इट बिगिंस एट प्यूबर्टी, मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस है वो 12 to 14 years of age में स्टार्ट होता है, then continues throughout life. It is a continuous process, occurs continuously without stopping. Sperms are produced daily. Next is it occurs in testes, takes place in seminiferous tubules and supported by Sertoli cells. It produces large number of sperms, millions of sperms every day, and one spermatogonium leads to 4 sperm cells. Involves meiosis. It includes meiosis 1 and meiosis 2. Converts diploid means 2 in cells को haploid cells में convert करता है. Then formation of haploid cells. Final sperm जो होता है it contains 23 chromosomes only. Maintains chromosome numbers after fertilization. Includes spermiogenesis. Final stage of maturation जो है that is spermiogenesis.
स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं मोटाइल स्पर्मेटोजोआ में या स्पर्म्स में. हार्मोनल कंट्रोल, controlled by hormones, testosterone and FSH, that is follicle stimulating hormone. Next is oogenesis. Oogenesis is the formation of ovum in ovaries, and it starts before birth at about 20 weeks of gestation or 5th month of gestation and continues after puberty. Stages of oogenesis. The stages are oogonia, that is a primitive germ cell, and primary oocyte, secondary oocyte, and then ovum. At 20th week, the oogonia are about 7 million in number. But at birth, the total number of primary oocytes are 2 million only. And at puberty, only 4 lakh primary oocytes are left behind. And out of these, only 400 primary oocytes are likely to ovulate during the entire reproductive period of a female. So let's discuss it in detail. As I had mentioned that the oogenesis process starts from the fetal life before birth. Oogonia, which are diploid in number, contains 46 chromosomes. They multiply in number by the process of mitosis, and there is increase in the number of oogonia, that is in millions. And after that, there is growth phase. They continue to grow and form primary oocyte, which is again contains 46 number of chromosomes. Then primary oocyte, which is formed from oogonia, starts meiosis 1. After starting meiosis 1, it stops at the prophase 1. There is meiotic arrest, and it get arrested in the diplotin stage of the prophase 1, and all primary oocytes remain inactive till puberty. So, birth, childhood till puberty, there is no oocytes are formed. Primary oocytes remains arrested. Then after puberty, the ovaries start functioning under hormonal control and oocyte development continues. One primary oocyte matures every month. From puberty onwards, during each menstrual cycle, usually one primary oocyte is selected. This happens under the influence of hormone FSH. The selected oocyte grows inside a developing follicle. इसको हम ग्राफियन follicle बोलते हैं. And after this, it completes its process of meiosis 1 and forms a secondary oocytes which is haploid in number and a first polar body. The division is unequal. It means that the size of secondary oocyte and first polar body differs. The size of secondary oocyte is larger than that of the polar body, and it contains more cytoplasm than polar body, because the secondary oocyte after fertilization has to nourish the zygote which is formed after fertilization. Then after formation of secondary oocyte, there is starting of meiosis 2. But in meiosis 2, the secondary oocyte is arrested in the stage that is metaphase 2 of meiosis 2, and in this arrested state, it is ovulated from the Graafian follicle. Then after ovulation, if fertilization occurs, then meiosis 2 completes and form ovum and secondary polar body, that is haploid in number. Ovum is haploid in number. If no fertilization occurs, the secondary oocyte degenerates. So the chromosomes in oogenesis, oogonia, it contains diploid number of chromosomes. Primary oocyte, it also contains diploid number of chromosomes, that is 46, but in secondary oocyte, it becomes haploid, that is 23 in number, and in ovum, it again
haploid number of chromosomes, that is 23. Let's understand oogenesis with the help of this diagram. Before birth and fetal life at about 20th week of pregnancy, the oogonias are formed, which can be 6 to 7 million in number, but after that its number declines. By the atresia, they got degenerated. These primordial cells undergo mitotic division and are increased in number, and they grow and enlarge and become primary oocyte. After becoming the primary oocyte, they undergo meiosis 1, which stops in prophase 1, and it got arrested in this stage. जितने भी primary oocyte हैं वो inactive रहते हैं till puberty. It is diploid in number. कोई भी नया oocyte जो होता है वो form नहीं होता है, और जो oocyte primary oocyte है it remains arrested. तो birth, childhood और till puberty they remain arrested. But after puberty, और हम कह सकते हैं reproductive life, under the hormonal control, जो oogenesis का process है it resumes, and the primary oocyte resumes development. हर महीने एक primary oocyte जो होता है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है, and it completes its meiosis 1 to form a secondary oocyte and first polar body. Then this secondary oocyte undergoes meiosis 2, but it got arrested in the stage metaphase 2, and in this arrested stage it is released during ovulation. अगर fertilization होती है तो this secondary oocyte completes its meiosis 2 process, but अगर नहीं होती है तो this secondary oocyte got degenerated. Means after fertilization is secondary oocyte meiosis 2 complete करता है और it forms ovum plus a secondary polar body. Next are the features of oogenesis. First one is begins before birth. Oogenesis starts during fetal life at 20th weeks of gestation. Oogonia are formed and developed into primary oocytes before girl is born. और ये primary oocytes जो हैं arrested रहते हैं in prophase 1 till puberty. Second one is one ovum per cycle. After puberty, during each menstrual cycle, एक ovum release होता है, जबकि बहुत सारे ग्रेफिन फॉलिकल्स जो होते हैं डेवलप करते हैं, पर एक ग्रेफिन फॉलिकल उनको डोमिनेट करता है और अपनी मैच्योरेशन कंप्लीट करता है. दिस इंश्योर्स कंट्रोल्ड और लिमिटेड रिलीज ऑफ ओवा. इट स्टॉप्स एट मेनोपॉज. oogenesis continues from puberty until menopause. Menopause usually occur around 45 to 50 years of age. और जब menopause होता है तो ओवरीज ओवा रिलीज करना बंद कर देती हैं, हार्मोन लेवल्स जो होते हैं हमारे डिक्लाइन कर जाते हैं, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है परमानेंटली स्टॉप हो जाती है. सो इट स्टार्ट्स, जो oogenesis का प्रोसेस है, इट स्टार्ट्स बिफोर बर्थ, कंटिन्यू one ovum per month, and it ends at menopause. Now difference between sperm and ovum. जो sperm है that is formed by the process of spermatogenesis versus oogenesis. जो spermatogenesis है start at puberty, जबकि जो oogenesis है that the process of that is started from the fetal life. Then continuous versus cyclic. जो spermatogenesis का process है sperm formation का, वो एक continuous process है. Millions of sperms are formed every day. Versus cyclic means जो ovulation है या जो oogenesis का process है that is cyclic. In every menstrual cycle one ovum is released. Millions versus one ovum. There are millions of sperms and are continual supply versus there is one ovum in one menstrual cycles. Then testes versus ovaries. The sperms are formed in testes and the ova is formed in the ovaries, that is female gonads, and testes are the male gonads. Thank you for watching. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to my channel and more nursing and medical topics.
See you in the next video. Thank you.